Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and today we are doing question number 3 of exercise 2.2 of chapter number 2 polynomials. तो चलिए start करते हैं. Verify whether the following are the zeros of the polynomial indicated against them. तो यहाँ पे polynomial जो given है उसके विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, तो हमें वैल्यू पुट करनी है और पता करना है कि ये पॉलिनोमियल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं. तो इस तरह के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं. जो वेरिएबल की वैल्यू गिवन है वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. इफ वी गॉट जीरो, अगर यहाँ पे जीरो रिजल्ट आ जाता है तो वो पॉलिनोमियल क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है एट दिस वैल्यू. राइट, सो लेट्स फाइंड आउट. x की वैल्यू -1/3 है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है. सो p एट p -1/3, 3 into -1/3 plus 1, 3 3s are cancelled, -1 plus 1 become 0. So we got overall expression, it evaluates to 0. It means this expression is 0 of the polynomial at x is equal to -1/3. Second is px is equal to this expression. Now x is equal to 4/5. p 4/5 minus pi. So 5 5s are cancel. 4 minus pi की वैल्यू 22/7 ले सकते हैं या 3.14 होती है. So we got 1.14 something. Right, so we didn't get the zero. It means this expression is not a zero of the polynomial at x is equal to 4/5. Okay, इस equation का next part है third. Px is equal to this one expression. Now we need to find that whether it's a zero of the polynomial at x is equal to 1 and -1. So for p, x की value 1. 1 का square 1 -1 it becomes 0. So yes, it's a zero of the polynomial at x is equal to 1. Now let's find out at x is equal to -1. -1 का square is 1. -1 is equal to 0. Again, yes, it's a zero of the polynomial at x is equal to -1 also. Now px is equal to this expression at p -1. -1 plus 1 become 0 into -1 -2 it becomes -3. So 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आता है. So yes, this is a zero of the polynomial. p next value है x की 2. So at p 2 plus 1 is 3, 2 minus 2 is 0. So we get 0. So this is a zero of the polynomial at x is equal to 2. इसका नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ वन, थर्ड क्वेश्चन का ही. px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है 0. सो वी गेट 0. 0 का स्क्वायर 0. सो यस, दिस इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. नाउ फॉर दिस एक्सप्रेशन px इज इक्वल टू ओके दिस वन, एक मिनट. या सो फॉर x की वैल्यू -5/L. तो p -5/L, L into -5/L plus m. L cancel हो गया, -m plus m, it become 0. So this is a zero of the polynomial at at x की value -m/L. Next is a seventh part. px is equal to this expression. So first of all we find it for this value -1/√3. p -1/√3, 3 into -1/√3 का स्क्वायर -1. So 3 into -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1. So 3 3s are cancelled, 1 minus 1 become 0. So at -1/√3, this is a zero of the polynomial. Now for 2/√3, let's find out p 2/√3. 3 into 2/√3 का स्क्वायर -1. 3 into 4/3 -1.
तो ये बन गया 4 minus 1 is 3. So at x की वैल्यू 2 upon root 3, this expression is not a zero of the polynomial. 8th है px is equal to this expression. Now we need to find it for x is equal to 1 upon 2. So p 1 upon 2 is equal to 2 into 1 upon 2 plus 1. 1 plus 1 becomes 2. So we didn't get 0. So hence x is equal to 1. 1 upon 2 is not a zero of the polynomial for this expression. Right? So we have done question number 3. Next is question number 4 and we will continue this question in the next video. तब तक के लिए thank you and bye bye.